Assalamualaikum. As per our class 10th chemistry first chapter, that is chemical reactions and equations. Chemical reaction समझन ब्रो as गस पता आसिन chemical change क्या गो तम खतर पर ओस changes are of two types, physical changes and chemical changes. When show physical change क्या गो तो chemical change क्या गो. Physical changes are those changes in which no new substances are formed. यम गई तिम changes यथ में चीज बदलान छ की तम मतलब क्या गो तम मतलब गो in these changes chemical formula does not change. Formula शन change गसान कहीं ते. For example, melting of ice. Melting of ice छ physical change. क्या छ physical change सु यस मनी समझ अस आइस अस कोर मेल्ट बनो वाटर अस वनान आइस तो वाटर छ अकुई चीज यम छ चीज बदलेमत तम मतलब क्या गो आइस छ फार्मूला छ सच दैट इज H2O. वाटर निश फार्मूला H2O गो फार्मूला छ चेंज गमस कहीं ते तम मतलब गो चीज छ बदलेमत कहीं नो सबस्टेंस छ प्रोड्यूस गमत कहीं ते गो सो चेंज यथ मत चीज बदल कहीं ते नो चीज बन कहीं ते तत छ ना वना फिजिकल चेंज. वन वुचो अम पत chemical change क्या गई. Chemical changes are those changes in which new substances with new properties are formed. अथ मज चीज यम बनान चीज तम नई चीज आसान यम बनान चीज तम नई चीज आसान तिमन आसान डिफरेंट प्रॉपर्टीज यमो चीजों पे तम बनेमत आसान. फॉर एग्जांपल अगर इस पढ़ो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन रलियाव तो वनो वाटर यह केमिकल चेंज. वन क्या केमिकल चेंज अख चीज यथ मज चीज बदलेमत ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन की H2O दैट इज वाटर ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन की ये वाटर गो चीज बदलेमत अम मूजूब ये केमिकल चेंज. तो बे क्या अत मज प्रॉपर्टीज चेंज गसान अत मज फार्मूला गसान चेंज हुत वो फार्मूला गसान चेंज ये फार्मूला चेंज गसान. वन वो फार्मूला चेंज गसान कि ना ये फार्मूला H2 बे फार्मूला O2 ये H2 तो O2 फार्मूला कहें ये फार्मूला H2O गो फार्मूला चेंज गमज चीज बदलेमत इसलिए बने ये केमिकल चेंज. तो वन वो ये चेंज आई ये H2 बनो H2 प्लस O2 बनो H2O यह केमिकल चेंज. अत मज वो क्या क्या गोमुत अम पत ये वो गोडनथ बे कर रिपीट थोड़ा. फिजिकल चेंज गई तम चीज अत मज चीज बदल कहें तम मतलब गो फार्मूला चेंज गसान कहें तो ये क्या गसान ये चीज बदलान तथ नई चीज बनान तथ फार्मूला चेंज गसान. तो वन वो ब्याख पॉइंट दोम पॉइंट ओल्ड बॉन्ड्स do not break and new bonds are not formed. फिजिकल चेंज मज ओल्ड बॉन्ड ब्रेक गसान कहें नई बॉन्ड तन बनान कहें. सह क्या मतलब गो इस वाटर वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर O सिंगल बॉन्ड H O सिंगल बॉन्ड H दैट इज H2O. तो ये वाटर तथ इथे पे O सिंगल बॉन्ड H O सिंगल बॉन्ड H. वन इस स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर अगर तुम चेक करो ये बॉन्ड ओस तो ऑक्सीजन दरमियान सिंगल बॉन्ड ओस तो ऑक्सीजन दरमियान सिंगल बॉन्ड तमें बॉन्ड मौजूद गो यम ओल्ड बॉन्ड तमें मौजूद नई बॉन्ड बनेमत कहें. सो गो इन दीज चेंजेस इन फिजिकल चेंजेस ओल्ड बॉन्ड्स डू नॉट ब्रेक एंड नो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड. यमन चेंजन मज ओल्ड बॉन्ड ब्रेक गसान कहें तो नई बॉन्ड बनान कहें मगर यमन चेंजन मज ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक केमिकल चेंजन मज ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड. ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक and new bonds are formed. वन अगर इसे चेक करो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक गमत नई बॉन्ड बनेमत ये H2 मतलब गो H दरमियान सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H यह ओल्ड बॉन्ड बे O2 सह O डबल बॉन्ड O गो ये ओल्ड बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H बे O डबल बॉन्ड O. वो वाटर वुचान अत बनो वाटर तमें वनी वुचमुत तथ पे बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H O सिंगल बॉन्ड H गो ये O H दरमियान बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये ना कुछ जाए बॉन्ड गो ये H सिंगल बॉन्ड H सह मौजूद कहें गो यह ओल्ड बॉन्ड ब्रेक गमुत ये O तो O दरमियान डबल बॉन्ड ये सह मौजूद कहें मतलब सह ब्रेक गमुत. वो बॉन्ड बनियोमुत O सिंगल बॉन्ड H यह मौजूद अम मतलब गो ये O सिंगल बॉन्ड H यह नो बॉन्ड गो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक गमुत नई बॉन्ड बनियोमुत केमिकल चेंजन मज. वो केमिकल चेंजन मज ओल्ड बॉन्ड ब्रेक गसान तो नई बॉन्ड बनान.
Trim cheese, you must cut the change you want, physical change you must change you want in physical properties like color, state, shape, etc. Human cheese and change it. While physical change in physical changes, only physical properties may change. Atma second khali physical properties like color have change state, solid state, liquid state, gas state. You must try solid state have convert liquid asmas, gas state have convert liquid state asmas. Yeah, shape have change human physical change asmas. Agar check karo, yet so ice, so by now water, change gumut state, your solid state asmas, you should liquid state asmas go state change gumut. Big shape change ice shape, water is banya badal shape, इसलिए shape change. अगर human properties and change physical change. यथ मज अगर ट्रेम पॉइंट चेक करो यथ मज change in physical changes, physical properties as well as in chemical properties. ये change chemical change मज physical properties and the chemical properties and physical as well as chemical properties may change. Chemical changes which is be clarity jaldi mainly paron chemical changes. Chemical changes get changes, those changes in which new substances with new properties are formed. Atma cheese badlan tacha asan nai properties that cheeses hormone is different. In these changes chemical formula change. Atma chemical formula change gasan. The bay old bonds to break gasan, the new bonds to banan. The bay one has as much physical as well as chemical properties and change haka yet. One go fourth point physical change and mas. These changes are temporary changes, that is they are reversible changes. Yum changes physical changes temporary changes. Yum reverse wapas gasan. For example, as bano ice water melt karit, तो वन हको इस water वापस बनायत ice by freezing the water. अगर इस ice करा melt बना water हको वापस freeze कर बनायत ice, इसलिए हसा चाहिए reversible change, इसलिए चाहिए temporary change. मगर यम chemical changes आसान, तिम हकन ऐसे reversible थे, तिम हकन ऐसे irreversible. For example, as बनो आता है water, H2 plus O2 gives H2O. इसे इस पता. वन अगर इस water करो electrolysis means break down करो water, ठीक? सो बनित वापस H2 plus O2 गो वाटर बनो वापस कथ मज गो कन्वर्ट हाइड्रोजनस तो ऑक्सीजनस मज ये गई रिवर्सिबल चेंज. वन अगर वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जांपल अगर इस कोल जालो तक क्या गस पता सह कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड बे नीर हीट एंड लाइट तक नीर. तो वन अगर वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस कह या पेपर करो इस बर्न सो इन वापस पत कहें वापस पेपर फॉर्म मज, इसलिए गई सो इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल चेंजन खतर त्रावान सिंगल एरो, तो यम रिवर्सिबल चाहान तमन त्रावान डबल एरो, योकुन डायरेक्शन ब्या योकुन डायरेक्शन. तो नेक्स्ट वन वो chemical changes क्या गो. Chemical changes those changes in which new substances with new properties are formed. In these changes chemical formula does not change. Atma चीज बदलान तथ चीज आसान बदले properties different properties तो बे आत्मा formula change गसान. बे वन आत्मा old bonds break गसान new bonds बनान. बे वन आसिम जगह ऐसे reversible ते irreversible ते तो बे वन ऐसे आत्मा physical properties अंते chemical properties अंते change हकान येत. One वो chemical reaction क्या गो. Chemical reaction is a process in which chemical change takes place. Chemical reaction is a process yat maz chemical change was means yat maz cheez as badleyomut, formula change gumuz, old bond as break gumut, new bond as banemut. Timan change and chase, timan process and chase now are chemical reactions. Means chemical reaction is a process yat maz chemical change as amuz. For example, formation of water from hydrogen and oxygen. Formation of water from hydrogen and oxygen is a process. Atma is chemical change. इसलिए बने ये chemical reaction. Clear? तो वन वो चो इस पतन वन वो चो इस chemical equation क्या गो. अगर भाई यह chemical reaction represent करन with the help of symbols and formulas.
अगर बह यह रिएक्शन यह प्रोसेस लिख विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज H2 formula of hydrogen plus O2 formula of oxygen, it gives H2O is formula of water. One लेश में यह रिएक्शन लेश में विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज अस वनो यात नाव या गई केमिकल इक्वेशन. गो केमिकल इक्वेशन छ आसान रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज. गो मीन्स अगर इस केमिकल रिएक्शन हावन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज that's now chemical equation. Chemical equation is the representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulas. For example, burning of magnesium ribbon in air. This is a process of burning of magnesium ribbon in air. This is a process of chemical change. इसलिए बने chemical reaction. One अगर भी यह reaction यह process how with the help of words. That is magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Now word equation. When यह reaction लिखवन with the help of symbols and formulas. For example, magnesium symbol Mg, oxygen is formula O2, and magnesium oxide is formula MgO. को यह reaction लिखा with the help of symbols and formulas. इसलिए ऐसा बने ये chemical equation. वो याद ना chemical equation, याद ना chemical reaction. Well, equation is लिखान side, left side go right side, that is left hand side and right hand side of a reaction or equation. When is left side is लिखा तम side is always लिखा reactants. तो ये मान लिखा है प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड. रिएक्टेंट्स गए ओरिजिनल सब्सटेंसेस दैट आर टेकन. यम गोड निवान चीज तम गए रिएक्टेंट्स या दो सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज. तम चीज यमन चेंज आमज केमिकल चेंज आमज तिमन नाम वन रिएक्टेंट्स. तो यम लिखा लेफ्ट साइड. दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्मड आफ्टर द केमिकल चेंज यम चेंज ये बनान चीज तिमन नाम वन प्रोडक्ट्स. वन अगर अक खुद ज्यादा रिएक्टेंट्स या अक खुद ज्यादा प्रोडक्ट्स तम सेपरेट कर विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन. फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट अख मैग्नीशियम बे ऑक्सीजन यम कर सेपरेट विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन. इथे पे अगर प्रोडक्ट अक खुद ज्यादा तम तक सेपरेट विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन. अमन मजबाग एरो सह हां डायरेक्शन ऑफ द चेंज मीन्स यमन आई चेंज तो बने यम चीज. वन अम पत दो किस्म इक्वेशंस केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. यथ दिमो एग्जांपल C plus O2 gives CO2. तो यथ दिमो एग्जांपल Mg plus O2 gives MgO. वन वो सेम अगर सेम वो लेफ्ट साइड या रिएक्टेंट साइड कार्बन ये अगर वो प्रोडक्ट साइड अत कार्बन अकुई. अगर ये वो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन अगर ये वो रिएक्टेंट साइड सॉरी प्रोडक्ट साइड अत ऑक्सीजन गो वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स इक्वल. सो इक्वेशन यथ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल सेम आसन तथ ना वन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. गो ये वो कार्बन ये कार्बन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन अत वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड और ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम. यम सेम आसन तथ ना वन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड गो ये सेम कहें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सेम कहें तथ ना वन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम बैलेंस्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन अकुई गो यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहें क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सारी इक्वल कहें गो ये इक्वल आसान सेम आसान तथ ना वन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन.
Unbalanced chemical equations are those equations in which number of atoms of different elements on both the sides is not same. Balanced chemical equation is that equation in which number of atoms of different elements is same on both the sides, that is product side and reactant side. Balanced chemical equation gay so equation if number of atoms reactant side to be number of atoms on product side of different elements are same. तो वही वो अम पे अनबैलेंसड गो तथ मे पाने बह लिखित या लिखुन ये लिखित इज सेम तक लिखुन इज नॉट सेम नंबर ऑफ एटम्स आसान सेम कहें एग्जांपल mg + O2 gives MgO ये वो कार्बन ये कार्बन ये ऑक्सीजन गो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट तुम बराबर इसलिए गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये अगर चेक करो mg ऑक्सीजन ऑक्सीजन अकु इसलिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वन वो पोर्मुत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स वन करो ये चेक तो हुथ मज चेक अगर कार्बन चेक करो कार्बन एटम अकिस मास 12 सो गो 12 टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स करो चेक प्लस अकिस ऑक्सीजन 16 O2 16 + 16 दैट इज 32 अगर चेक करो ये बनान टोटलस मज 44 मास रिएक्टेंट मास बना 44 वन अगर ये वो कार्बन डाइऑक्साइड मज कार्बन गो 12 प्लस ऑक्सीजन O2 गो 32 यमन अगर ऐड करो सह बना 44 ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कथ मज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मज वनो तेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सैटिस्फाई कर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासस वन करो ये मज चेक unbalanced chemical equations magnesium mass 24 plus O2 which is 32 यमन करो add that is 56 वन अगर ये करो चेक ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम 24 अकिस ऑक्सीजन 16 दैट इज 40 अगर ये करो चेक ये पान वन बराबर कहीं इज नॉट इक्वल टू 56 इज नॉट इक्वल टू 40 वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स हेंस unbalanced chemical equations do not satisfy law of conservation of mass यम satisfy कर law of conservation of mass इसलिए जरूरी unbalanced करने बो balance गो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉल्ट ड्रॉबैक सो these do not follow or these do not satisfy law of conservation of mass इसलिए जरूरी कर बैलेंस ताकि यम कर फॉलो so as to follow law of conservation of mass गो वो तेल अम पे why do we balance unbalanced chemical equations क्या unbalanced कर balance in order to satisfy law of conservation of mass